हेलो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो ब्लॉग। आज जो वीडियो ब्लॉग का मेरा सब्जेक्ट है, एज यू नो आई हैव बीन ट्वीटिंग फॉर लास्ट 2 days, इट्स अबाउट अ वुमन, इट्स अबाउट an incredible woman. You know, she is no ordinary woman. Her name is Mitali, and by the way, she is the only woman army officer who has won the gallantry award till date. ना इनके पहले किसी लेडी ऑफिसर ने जीता है वो अवार्ड, सेना मेडल, ना उनके बाद किसी ने जीता है। लेकिन कहानी ये नहीं है कि इन्होंने जीता है, कहानी ये है कि ये इतनी बहादुर जो महिला ऑफिसर है आर्मी में, आज हमारी केंद्र की सरकार और खुद आर्मी के लोग, हाउ आर दे ट्रीटिंग हर। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इनको गैलेंट्री अवार्ड क्यों मिला था। 2010 में आप सबको पता होगा कि काबुल में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इंडियन गेस्ट हाउस पे, काफी सारे लोग मारे गए थे उसमें। मिताली, हु इज फ्रॉम द आर्मीज एजुकेशन कोर, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर 19 सिविलियंस एंड मेनी ऑफ हर फेलो ऑफिसर्स, इन लोगों को बचाया। यू कांट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ सिचुएशन शी वुड हैव बीन इन। वहां पे इन्होंने दर्जनों लोगों को, शी सेव्ड dozens of people without caring about her own safety, and rightly so the Indian army decided to honor her with Sena medal, and she got that. Fast forward 2015 और 2014, आज क्या हो रहा है इस लेफ्टिनेंट कर्नल मिताली मधुमिता के साथ। She's been working for last 17 months without pay. Yes, you heard it right. Without pay. Why? Because 2010 में इनको ये ऑप्शन दिया गया था कि क्या आप परमानेंट कमीशन एक्सेप्ट करना चाहती हैं, which means that whether you want to opt for the permanent commission within the army. Due to various reasons, मिताली ने उस वक्त ना कर दिया था। एंड बाय द वे, इनको जो ऑप्शन दिया गया था, अकॉर्डिंग टू मिताली, आर्मी डिडंट इवन हैव द प्रोविजन टू गिव दैट ऑप्शन सो दैट द ऑफिसर्स ऑफ एसएससी और शॉर्ट सर्विस कमीशन कैन गो फॉर द पीसी, विच इज परमानेंट कमीशन। लेकिन 1 साल के बाद मिताली ने दोबारा से वो ऑप्शन एक्सेप्ट करना चाहा, आर्मी ने उसे डिनाई कर दिया। यहां पे मैं आपको बता दूं कि यही जो ऑप्शन है मेल ऑफिसर्स के साथ आर्मी में 2 बार दिए जाते हैं। उनको ये ऑप्शन 2 बार दिया जाता है। मिताली को 1 बार दिया गया, और वो तब दिया गया जब ये ऑप्शन अवेलेबल था ही नहीं इंडियन आर्मी के पास। आपको पता है कि मिताली जब अफगानिस्तान जा रही थी, और जब अफगानिस्तान जाने के लिए ऑफिसर से जब पूछा जा रहा था, मुझे पता है, मैं लंदन में था उस ज़माने में, लेकिन कई सारे ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने, दे वर अनविलिंग टू गो देयर, नॉट इनकार किया था, बट दे वर अनविलिंग टू गो देयर, एंड देयर वेरियस एक्सक्यूजेस। दैट्स हाउ डिफिकल्ट एंड दैट्स हाउ फ्राइटनिंग इट वाज टू बी पोस्टेड इन अफगानिस्तान इवन दैट टाइम। शी हैड गॉन देयर। आज 17 महीने से जो उसे नहीं मिल रहा है, दैट पोजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एनीवे, मिताली ने AFT, जो आर्मी आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, उसको कांटेक्ट किया, एंड AFT ने 2015 में, मार्च 2015, दे रूल्ड इन हर फेवर। AFT, बाय द वे, इज द हाईएस्ट जुडिशियल, मिलिट्री जुडिशियल बॉडी विद इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन AFT रूल्ड इन हर फेवर। देन व्हाट हैपेंड? इंडियन आर्मी has decided to challenge that decision in Supreme Court. I mean, look at the priority of Indian Army. There is an officer who had grievances. That officer is not a coward. That officer brought laurel, made India proud with her heroics. And this is how you are treating her? Is that how you are utilizing the taxpayers' money? By harassing your own brave officer who is a real brave heart. आप उनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं।
उस फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। वो क्या मांग रही है? शी इज नॉट इवन आस्किंग यू गाइज टू give her PC or permanent commission. All she's saying that give her the option to be considered and then decide on her merit. Is that too much to ask? For last 17 months, no money, no honor, made to go through all kind of humiliation. I want to ask this question to armed forces. Remember, you've been protesting about the implementation of OROP. And you've had one gripe from the civilian government, that they don't respect your sacrifices. I want to ask you, do you respect your sacrifices of your own people? Here is a lady officer who has created something that no lady officer in the history of Indian Army could achieve. And look how she's being treated. Is that how you want to set an example for others? Is that how you want to motivate others to come and join Indian Armed Forces when the Armed Forces is suffering from the serious shortage of officers? Imagine the impact it will have on the future aspirants who want to join Indian Army. I want to ask one question to Modi government as well. You have been tom-tomming about Beti Bachao, selfie with daughter, women's empowerment. Where is all that when your government moves to Supreme Court recommending that the officer be relieved from her post, from the service, when the officer actually wants to go for the PC, the permanent commission? What is wrong? Have you found her to in dereliction of duty? If anything, she has been one of the most brightest of female officers that Indian Army has had. You can see, in the side video or side screen, you can see all those awards that she has got. And how are we treating her? I think this is, as a common person, as a person who loves India, I think my conscience is shaken. And if it doesn't shake your conscience, I think you need to ask few questions to yourself. And you need to ask, what will it take for your conscience to be shaken? I know the misery she is going through. Just imagine working for 17 months without pay, and now even having to worry about paying the legal fees. Why are we putting her in that situation? Why is government going after her? Why is military going after her? It looks like a clear case of vendetta. I sincerely request to Prime Minister Mr. Modi and Army Chief General Dalbir Singh Suhag that please intervene, and for God's sake do not put her through any more misery that she's already gone through. It's just not fair, and we are setting a very, very bad example for the future generation. I hope you listen to me. Listen to me not because I'm saying this. Listen to me and intervene because that's the right thing to do. Thank you very much.